Political Science lecture series on Napier, and today we're going to discuss a very important philosopher, Machiavelli. Niccolo Machiavelli was an Italian philosopher, and the name is very famous. Uska usage बहुत common है. So we're going to discuss some of the nuances of his philosophy. सबसे पहले उसी तरह जिस तरह हम पहले ट्रेंड में डिस्कस करते हैं, his philosophy ideology is realism. His focus is on how to build state. His focus is on statecraft. उससे पहले इंडिया के अंदर चाणक्य की philosophy आती है, which is a very realist and pragmatic philosophy. इसी तरह चाइना, जापान और वहाँ पर भी ये वाली philosophy बड़ी common होती है कि वहाँ पर legal codes develop किए जाते हैं. रोम के अंदर सिसेरो develops and advocates for a republican rule. इसके बाद हमारे पास थॉमस हॉब्स की philosophy आएगी, लेविथन. So these are some of the context under which Niccolo Machiavelli operated. Machiavelli के तीन important जो किताबें हैं, The Prince, Discourses on Levi, The Art of War. This is different from The Art of War of Sun Tzu, तो दोनों को आप ना करें. But the most important piece of work जो कि हमारे कोर्स से related है, that is The Prince. और ये हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे that is from his book The Prince. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप याद करें ये किताब किसकी है, क्योंकि MCQs में पूछा जा सकता है, वो कब पब्लिश हुई ये भी आप देखें, तो आपकी MCQs की तैयारी भी साथ साथ. Again, let's discuss the political context under which Machiavelli operated. Machiavelli was an Italian philosopher as discussed, but back in his time, Italy was not one country as we know it today. Italy was divided in different fragmented city-states who were vying and competing for power of all of Italy. तो फ्लोरेंस की separate एक city state थी, मिलान की separate थी, वेनिस की separate थी, नेपल्स की separate थी. These were all separate city states with different governments of their own, and they were vying for control over all of Italy. इनके अलावा, इन city states के अलावा जो different institutions थे within Italy or in the larger region, they were also claiming control over Italy. So papacy, which is basically church, France, Spain, and the Holy Roman Empire, all were trying to dominate Italy. तो basically एक anarchy का समा था इटली में, और कोई strong central leadership नहीं थी कि जो इटली को unify करके या इटली को order restore कर सके. तो again in that anarchy के context में मैकियावेली ने किताब लिखी जो कि बहुत ब्रूटल, बहुत कैलकुलेटेड, कोल्ड हार्टेड वायलेंस को यूज करके स्टेट में ऑर्डर लाने को जस्टिफाई करती है. बट कॉन्टेक्स्ट उसका ये है कि चूंकि एनार्की में ऑलरेडी इतना वायलेंस चल रहा था कि मैकियावेली सॉ एक सेंट्रल रूलर विद वेरी स्ट्रॉन्ग आयरन फिस्ट रूल कि who will use violence and various other methods to bring order to the world. और ये कहा जाता है कि Lorenzo de Medici was the governor of Florence that time. So this book, The Prince, was written as both guide and to win favors from him. So, which is not surprising because authors in history used to write stuff to appease their political masters. तो अपनी The Prince किताब के अंदर वो जितना भी statecraft explain कर रहा है, basically is explaining how a state should be governed effectively. एक जो ruler है, a wise, prudent ruler, who he calls the prince, as the title of the book suggests, how that prince should construct state and how he should govern that state, और उसको किस तरीके से different चीज़ों को लेकर चलना चाहिए. उसके अंदर सबसे पहले वो types of principalities, types of territories that different territories that a prince can hold, उनको explain करता है. वो कहता है कि एक होती है hereditary principality जो कि आप inherit करते हो, क्योंकि बाप के बाद बेटे की रूल है तो बेटे ने बाप से जो inherit की. कुछ होती है न्यू प्रिंसिपैलिटीज जो आप एक्वायर करते हो, विच कैन बी डन थ्रू वेरियस मेथड्स. एक आपने अपनी पावर से कॉन्केस्ट के जरिए हासिल की, बाय पावर ऑफ अदर्स, किसी दूसरे के साथ अलायंस करके उसकी पावर से ली, बाय क्रिमिनल एक्ट्स, एक्सट्रीम क्रूअल्टी, बहुत ज़्यादा वायलेंस और शदीद तशद्दुद के साथ हासिल की, या बाय विल ऑफ द पीपल कि आपको किसी नई टेरिटरी में लोगों ने इन्वाइट किया, लोग आपको पसंद करते थे एज अ रूलर, और एक सिविक प्रिंसिपैलिटी जिसको वो कहता है कि लोगों की विल से आप बने. Then there are mixed principalities. These are the principalities जो कि annex की जाती हैं within the existing territories जो already present. And then there are ecclesiastical principalities जो कि church की principalities. Ecclesiastical is used with relation to the church. अब वो कहता है कि इनके अंदर जो hereditary principality है, that is the most easiest to govern. It is easiest to govern because जो subjects हैं वो उस family के rule से already accustomed हैं because they have been governed by that family for so long. So there is natural disposition
is to love the ruling family. The people, the subjects love the ruling family. तो hereditary principality is the best principality, बेहतरीन principality है जिसको आप ज़बरदस्त तरीके से govern कर सकते हो आसानी से for a prince, for a good ruler. New and mixed principalities, अगर तो new और mixed principalities में इन दोनों में अगर language और customs same है, जो आप नई ज़मीन टेरिटरी एक्वायर कर रहे हो, अगर उनकी लैंग्वेज और कस्टम्स प्रिंस जिस कस्टम्स और लैंग्वेज से एडहेयर करता है वही हैं तो दे आर ईजियर टू गवर्न. बट अगर उनका लैंग्वेज और कस्टम डिफरेंट है तो दे विल बी डिफिकल्ट टू गवर्न. उसमें फिर आपको होमोजेनिटी लानी पड़ेगी, आपको वायलेंस यूज़ करना पड़ेगा, कोएर्जन यूज़ करने का, विच मैकियावेली इज ऑल फॉर. इन सिविक प्रिंसिपैलिटीज वो वाली जो लोगों की विल से बनी है वहाँ पर आप क्रूअल्टी नहीं दिखा सकते हर वक्त, बिकॉज वो बनी ही लोगों की विल से, आपकी कोएर्जन से नहीं बनी, आपकी पावर और अथॉरिटी से नहीं बनी. अगर वो लोगों की मर्जी से बनी है तो फिर रूलर मस्ट रिटेन पब्लिक ट्रस्ट एट ऑल टाइम्स. Territories which are acquired by one's own power are better than those dependent upon favors of other. One's own power वाली are better than those which are acquired by others' power because वो आपके करिश्मे से बनी है. तो इसमें वो बताता है कि एग्जाम्पल भी देता है. So for instance, the territories which are acquired by the favors of others are like those which are acquired by Cesare Borgia, who was the ruler of Italy के अंदर. He was governing a city state और ये भी was a contender of power in the Italian control over Italy, and he believed कि this model is not sustainable. और वो हिस्ट्री में मिसाल देता है कि those who acquire territories by their own power are more successful. So for instance, Cyrus the Great in the ancient Persian Empire, Romulus Roman Emperor, तो जिन्होंने अपनी बलबूते पे, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपने कैरिज्मे पे टेरिटोरीज एक्वायर किए हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती. Second classification that he does is with regards to types of armies. So he says that there are 4 different kinds of armies for a prince. The first are the mercenaries. Mercenaries वो हैं जो कि hired soldiers होते हैं. तो you give them money and they fight for you. But they are dangerous and unreliable because अगर आपके opponents उसको आपसे ज़्यादा पैसे देंगे तो obviously they'll turn against you. Something that in Game of Thrones Bran does. So Bran gets more money from the other party. He says that I'm for a party who is going to give me more money. So that's how mercenaries work. Game of Thrones is an excellent exposition of this whole philosophy that Machiavelli explained. Then the second types are auxiliaries. Auxiliaries are those who are loaned by other rulers. So you have a good relation, alliance with another ruler, and you get those army as loaned by them. They are also dangerous and unreliable because obviously as soon as their support is cut off, you no longer have this army, so it's not reliable. The third are the native troops, your own indigenous troops, and these are the most desirable kind. So, जैसे Game of Thrones में again, there's the scene where Joffrey Baratheon, when he's not king as of yet, but he refers to the fact that Westeros needs an army of their own, indigenously raised. Mercenaries की उन्हें ज़रूरत नहीं because they're unreliable. They need to create a central army of their own. But he's shunned by his mother. But if you look at that idea, it was a very brilliant idea. उसकी ये बात later on proves to be true as well, that had they have an army of their own, they would have been more successful. But anyways, this philosophy is self-explanatory why native troops are more desirable than mercenaries. The fourth are the mixed troops. They are the ones that in which अगर native troops की combination with any of the two, native troops combination of mercenaries or native troops combination of auxiliaries. So any combination of native troops with either of these two will result in mixed troops. Machiavelli thought that mixed troops are more desirable than mercenaries and auxiliaries because कम कुछ portion of native troops उनमें होगा, but complete native troops are more desirable. So this is the most desirable, the second desirable, and then these two are the third most desirable kinds of armies. Now he talks about what the character of the ruler should be. मैकियावेली का premise ये है कि इंसान passionate है, emotional है और reasonable नहीं है as opposed to Plato. Hence Machiavelli believes कि चूंकि इंसान passion से govern करता है, reason से नहीं चलता, इसलिए एक अच्छे ruler को अपना order restore रखने के लिए, iron fist से rule करने के लिए लोगों के passion को maneuver करना चाहिए अपनी favor में, ताकि वो state को effectively govern कर सके. And in that he attempts to diagnose human behavior and human passion. So he said that there are 4 passions that govern human behavior: love, hatred, fear, and contempt. Love and hatred are incompatible with each other.
इसी तरह fear and contempt are also incompatible with each other. तो कभी भी आपकी love और hatred इकट्ठे किसी के लिए नहीं exist कर सकती, fear and contempt इकट्ठे exist नहीं कर सकते. What are the compatible passions? Love and fear are compatible. Like जैसे आपको अपने parents का होता है. Hatred and fear are compatible. जिस तरह आपको किसी कोई बंदा बहुत बुरा लगता है, उसका hatred भी है, उससे डर भी लग सकता है आपको. Love and contempt are also compatible. Hatred and contempt are also compatible. All of these fears, combination of these passions are compatible. But these two, love and hatred and fear and contempt, are not compatible passions. अब इन 4 compatible passions में से कौन से passions की combination inspire करनी चाहिए ruler को अपने subjects में? He says, और ये मैंने order of preference में ही रखा है, the most desirable is love and fear. If a ruler can inspire both love and fear, that's most desirable. क्योंकि लोग उसे मोहब्बत भी करेंगे, उसे overthrow करने की कोशिश नहीं करेंगे, order रहेगा, और उसे डरेंगे भी, उसके laws को भी enforce करेंगे. So ruler will be like a paternalistic figure. जैसे मैंने आपको बताया कि आप parents से आपको मोहब्बत भी होती है और डर भी होता है, तो आप सबसे ज़्यादा उनकी बात मानते हैं. That's how a ruler will have a more paternalistic role and most effective governance होगी, क्योंकि आपने manipulate करना है. If you can manipulate using this combination to bring order to society, that's the best. But if a ruler cannot inspire love and fear for whatever reasons, then he should go for hatred and fear. Fear बहुत ज़रूरी है कि मैकियावेली की philosophy में कि लोग डरेंगे नहीं जब तक ruler से, तब तक वो उसके obey नहीं करेंगे. जब तक वो laws obey नहीं करेंगे तो कमांड अथॉरिटी नहीं कर सकता रूलर, और वो सॉवरेनिटी इन्फोर्स नहीं कर सकता अपनी, और उसकी वजह से केओस रहेगा, जिस तरह का केओस मैकियावेली एक्सपीरियंस कर रहा था अपनी इटली के अंदर, जहाँ पे सारे लोग कर रहे थे. अगर कोई एक सेंट्रल बंदा हो जो फियर इंस्पायर कर सकता हो, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती. द थर्ड कॉम्बिनेशन इज लव एंड कंटेम्प्ट, एंड द फोर्थ इज हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट. According to Machiavelli, contempt, any combination with contempt is to be avoided at all costs. क्योंकि जब contemptuous होते हैं लोग किसी के खिलाफ, फिर उसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, और फिर उसकी अथॉरिटी अंडरमाइन होती है, सोसाइटी में एनार्की आती है. फियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसलिए आपको फियर टॉप प्रेफरेंसेस दोनों में मिलेगा, और बॉटम दोनों के अंदर आपको कंटेम्प्ट मिलेगा, विच इज़ टू बी अवॉइडेड. तो गोल क्या है? द गोल इज दैट द रूलर मस्ट एस्टैब्लिश हिज रेड एट ऑल कॉस्ट्स टू अवॉइड एनार्की, टू ब्रिंग एन ऑर्डर, सिक्योरिटी टू the society. Machiavelli's perspective on war is that between different states, it is inevitable. War can only be postponed. Because हमेशा इंट्रा स्टेट्स के आपस में अलाइन नहीं करेंगे अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए. द अदर स्टेट, क्योंकि मटीरियलिस्टिक है सारी स्टेट्स, एंड इट्स अ जीरो सम गेम. वन रूलर विल ऑलवेज वांट मोर टेरिटरी टू ऑक्यूपाई मोर पीपल. तो अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए sooner or later you will have to fight another state, because if you postpone the war yourself, the other state is going to impose a war on you, and then you'll have to defend. So you should never postpone a war to your own determinant. You should strike. Obviously आपको हमेशा जंग भी नहीं शुरू कर देनी चाहिए according to Machiavelli कि आप हमेशा preemptively जंग शुरू कर दो. You should fight and attack when you can destroy enemy's advantage, when you're in a better position, when you have strength. And he believed that politics is all about getting and keeping power, and warfare is indispensable to it. Politics is all about ritualized warfare, कि आपने warfare की calculation करनी है कि when you should do, how you should do, and how you should protect your country. One of the very important concepts in Machiavelli's philosophy is the concept of virtue. Virtue is a technical concept. It's not like virtue in the modern sense as we use it. This can be loosely translated, because Italian में लिखा गया था ये originally, as leadership qualities. कि कौन सी leadership qualities ruler में होनी चाहिए. It's a particular kind of skill that a ruler must possess. इसका premise ये है कि ये हम एक morally incoherent world में रहते हैं, in which there is a sharp distinction between what one deserves and what one gets. तो अच्छे लोगों को, deserving लोगों को वो चीज़ नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए. So nature is not naturally going to bring order in universe. That's what Machiavelli is saying. Anarchy इटली में इसलिए है because nature खुद आके ठीक नहीं करेगी इस anarchy को. Order restore करने के लिए कुछ skills, leadership qualities require हैं, जो कि किसी को खुद अपनी personal will के जरिए enforce करनी पड़ेंगी. कोई automatic कुछ नहीं होगा. So virtue is a quality that enables to face the blows of misfortune and overcome with whatever means necessary.
तो प्रिंस के अंदर, एक सक्सेसफुल प्रिंस के अंदर ये फीचर्स होने चाहिए कि ये जो मिसफॉर्चून है, ये जो इनकोहेरेंट वर्ल्ड हमने इनहेरिट किया है, कि जिसकी वजह से एनार्की है या मसले हैं सोसाइटी में, उसको उसे whatever means necessary यूज़ करके उनको इन्फोर्स करना चाहिए. whatever means necessary वो पीछे उसने जिस तरह कि आपने कैसे टेरिटरीज एक्वायर करनी है, वॉर किस तरह लड़नी है, आर्मीज कैसे डिज़ाइन करनी है, किस तरह आपने लोगों में पैशंस को मैनिपुलेट करना है, वो सारे मीन्स भी उसने बताए हुए हैं. So a prince needs to be amoral. There should be no absolute moral standards to which he should adhere. According to circumstances, he should do whatever he pleases. So a ruler should lie if required. A ruler should use force, coercion, violence, but again determining on the situation. इसीलिए जब वो civic principality है तो वहाँ पर आप ज़्यादा cruelty ना show करो, because आपके interest के खिलाफ जाती है. So the philosophy is that ends justify the means. Okay, it doesn't matter कि आपने means कौन से adopt किए हैं. If you are achieving your goals, that's all that matters. तो जो मैकियावेली की philosophy in a nutshell, again जो हम चार्ट बनाते हैं हमेशा, वो ये है कि the well-being of the state is the responsibility of the ruler. The ruler's own morality is less important than the good of the state. The well-being of the state can only be achieved should be achieved by any means possible, including deception and intrigue. And a ruler should never use his morality to come in between the larger interest of the state. He will be judged on the basis of results rather than the means he is used. Hence, a prudent ruler cannot and must not honor his words. यानी उसे किसी moral values के साथ standard के साथ adhere करने की ज़रूरत नहीं है. But he should make sure that there's an order in his country or in his empire. ये भी एक मैकियावेली की quotation है. Virtue brings ruin, while vice brings security and prosperity. So you can see that how he's advocating for a very harsh, manipulative, deceptive. He's like Littlefinger from Game of Thrones. कि आपने whatever means necessary to achieve your ends. इसकी लेगेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा लोगों को, रूलर्स को इस चीज़ ने इंस्पायर किया. या एकेडमिक्स कैन सी मैकियावेली की जो फिलोसॉफिकल थॉट है, देयर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस रूलर्स, हेनरी VIII of England, होली रोमन एम्परर्स, Oliver Cromwell, Charles V, Napoleon, all used these tactics that were used in this manual of having a successful statecraft by Machiavelli. The book was acknowledged as an inspiration for various writers, including Marxist figures and fascist dictators. So this is a very important legacy of Machiavelli. Machiavelli was also a product of Renaissance, because prior to Renaissance, religion पे बहुत emphasize किया जाता था, church इस पे बहुत emphasize करती थी, but Renaissance का एक बहुत important feature secularism था. So you can see that Machiavelli is secular in his approach, because he's not adhering, he believes that state should adhere to no religious or moral standard, because this goes against this religious tradition जो कि उस time चल रहा था. He took a more objective and scientific approach to political history, rather than arguing कि there is this larger natural force behind जो कि history को progress कर रही है. Machiavelli did not believe in this. तो इसीलिए उसकी एक cynical approach है जो कि बाद में Thomas Hobbes की political theory में translate करती है. So they are very important relevance to international relations as well, because ये जो political realism है IR में जो आप पढ़ते हैं, वो भी Machiavelli की theory से निकलता है. इसकी क्रिटिक बहुत ज़्यादा कॉमन है. Machiavellian behavior, we are colloquially refer bad behavior, deceptive and manipulative behavior, commonly referred to as Machiavellian behavior. इसके अंदर क्रिटिक की जाती है कि इस तरह के politicians जैसे रिचर्ड निक्सन ने फॉर इंस्टेंस यूज़ किया टू कवर अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, देन यूज्ड हश मनी टू कवर अप द इन्वेस्टिगेशन एंड वेरियस अदर सच एग्जांपल्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मैकियावेलियन बिहेवियर. तो इसकी क्रिटिक ये की जाती है कि इट्स वेरी वायलेंट, इट एडवोकेट्स अ वेरी ऑटोक्रेटिक अनजस्ट state model. It is also very anti-democratic because Machiavelli is all for using violence and using coercion and manipulation. So he's divorcing politics from morality. और इसके मुतालिक अल्लामा इकबाल ने कहा था that Machiavelli was a sharp agent of devil. So you can write that as well. So that's all for today on Machiavelli. In the next lecture we're going to discuss the social contract theory. See you guys next time.